चलिए हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करें। जिस मार्ग पर चलने के लिए ये रूप है, फिर प्रयास करें इस पर चलने के लिए। मार्ग कहाँ से मिलता है, दिशा कहाँ से मिलती है। कोई कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, कोई कितना भी मन और इंद्रियों की शक्ति से भरपूर हो, लेकिन उसका मार्गदर्शन वहाँ से होता है जहाँ से चीज़ें प्रकट हुई है। कहाँ से प्रकट हुई है? कल्पना करिए कोई ऐसी जगह है जिसको इस तरह से बनाइए, जिसको सर्वव्यापी अस्तित्व कहते हैं, जिसको परब्रह्म कहते हैं। यहाँ से चीज़ें प्रकट हुई है। जो चीज़ें प्रकट हुई है क्या? ये 24 तत्व हैं। ये सांख्य दर्शन में भी 24 तत्व कहा गया है। बाइबल में इसको 24 एल्डर्स कहते हैं। और संयोग से भारत मैप के बीच में जो एक गोल है, उसमें भी 24 स्पाइक्स है, जो अहिंसा का प्रतीक है। तो 24 तत्व में ये बुद्धि और मन भी है। बुद्धि है, मन है, और इसी में जिसको कहते हैं कि जीव, जीव को कहते हैं सोल, स्मॉल एस वाला सोल, कैपिटल एस नहीं। और इसी को कहते हैं महत्तत्व। इससे महत्तत्व और है। इस महत्तत्व को हृदय कहते हैं, और इसे चित्त कहते हैं। और ये है चित्त। नाम लिख रहे हैं, उसका कोई नाम दे नहीं सकता है। इस चीज का नाम के परे है, वो दृश्य के परे है, नाम के परे है। तो यहाँ से 24 तत्व प्रकट हुए हैं। तो सारा काम मन बुद्धि से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं, इससे दिशाहीन हो जाते हैं। जब ध्यान करके जब हम धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, जब बाहर हमारी इंद्रियां फंसी हैं, वहाँ से लौटा करके अंदर लाते हैं। धीरे धीरे ऊपर उठते उठते जब हम जाते हैं, और जब मन बुद्धि के ऊपर उठ जाते हैं, सोल यानी जीव भाव इसके ऊपर उठ जाते हैं, हृदय चित्त के ऊपर उठ जाते हैं, तब जगह मिलती जहाँ सोर्स है, वहाँ चीज आती है। तो ऐसे हर चीज़ों का उत्तर मिलेगा, बाकी से मिलेगा नहीं। आप कभी आशा न करिए शासन से, प्रशासन से, या किसी भी व्यक्ति से हमको वो चीज़ मिलेगी जो हम खोज रहे हैं, या कोई यूनिवर्सिटी के लैब के रिसर्च से नहीं मिलने वाली है। क्योंकि हर रिसर्च में कुछ न कुछ डर पैदा की जाती है, जैसे वायरस का डर, बैक्टीरिया का डर। जब आप यहाँ पर जाइए तो पता क्या चलता है, वायरस अगर न हो, वायरस बैक्टीरिया न हो तो दृश्य जगत नहीं होगा। ये वायरस बैक्टीरिया उस तरह से ताना बुना है जो इकट्ठा होकर के सब आकार के रूप में बदलते हैं। हमारा आकार ये वायरस बैक्टीरिया का ये सब नेटवर्क है। ये वो नेटवर्क जब बदलता है तब उसको चमड़े के रूप में देखते हैं, मसल्स के रूप में, बोन्स के रूप में, कार्टिलेज के रूप में, खून के रूप में, लिम्फ के रूप में ये देखते हैं। वही पर वायरस बैक्टीरिया का जो ताना बुना है, वही जानवर के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, वही पृथ्वी के रूप में। ठीक ऐसे समझिए आप, तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे ये वायर है, ये वायर है, मान लीजिए कि स्टील वायर है। स्टील वायर किस चीज से बना है? स्टील वायर बना हुआ एटम से, जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, ऐसा लिखा गया है। ये अंतिम सत्य नहीं है, ऐसे लिखा गया है, ऐसे मान लीजिए। स्टील आयरन इससे बना है। ये किससे बना है? ये बना है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से। 26 प्रोटॉन, 26 इलेक्ट्रॉन। ये भी रिसर्च अधूरी है, इसके अलावा भी कुछ है। फिर इलेक्ट्रॉन किससे बना है? ये बना है सबसे छोटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज से। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल है ये, जिसका वजन नहीं होता है। जिसका वजन नहीं होता है, मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो आयतन भी नहीं होगा।
तो उस तरह से जब इसके बारे में सोचिए तो मासलेस स्पेसलेस कॉन्सेप्ट आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन करने से होकर के, ये चार्ज करने से होकर इलेक्ट्रॉन बना, और करने से हुआ प्रोटॉन बना, ये करने से होते होते इस रूप में आ गया स्टील बना। ऐसे ही चीज है जिसको डीएनए आरएनए हम लोग कहते हैं। डीएनए आरएनए के विषय में आप लोग सुनते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, नहीं तो आप खोज लीजिएगा। कहते नहीं कि हमारा डीएनए, आपका डीएनए, सबका डीएनए जांच कर लीजिए। ये क्या है? ये हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, ये नर्व कोशिकाएं हैं अपने अंदर। ये एक ये है एक नर्व सेल है जिससे ब्रेन स्पाइनल कार्ड बना है। इसके अंदर डीएनए आरएनए है। तो डीएनए आरएनए किस चीज़ के बने हैं? उसका टुकड़ा टुकड़ा करके देखे तो इलेक्ट्रॉन उसके बने हैं, वायरस के, बैक्टीरिया के बने हैं। तो जो वायरस बैक्टीरिया, इससे एक डर हो गई है सबको, फोबिया हो गया है। पहले भूत का डर था कि वहाँ चुड़ैल रहती, भूत रहता, कैसे जाए। प्रेतात्मा का डर था, न जाने किसका किसका डर बैठाया गया था। तो ये जब तक ये डर बनी रहेगी तब तक हम कष्ट से, बीमारी से, चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। इसको डर हटाने का उपाय क्या है? जब तक मन और बुद्धि के जकड़न में रहेंगे, ये तरह तरह से उलझाएगी, परिक्रमा कराएगी सीमित में। परिक्रमा एक जगह पे नहीं कराएगी, ये पाथ बदलती रहेगी। जो लोग जैसे पढ़ाते नहीं कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो कैसे घूमता है अभी पूरा खोज नहीं हो पाया है। हमारे ध्यान के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रॉन का पाथ एक जैसा नहीं होता है। वही इलेक्ट्रॉन हर बार नए मार्ग को चुनता है। किस तरीके से आप देखिए, जब तक हम इस चक्कर में रहेंगे, लॉजिक के, मन के, बुद्धि के, इंद्रियों जो कहेंगे वही मानेंगे, तब तक डर भय से मुक्त नहीं होंगे। तो हम क्या करें कि इन सब के चक्कर से थोड़े समय के लिए ऊपर उठें। इसलिए हम इग्नोर नहीं कर सकते कि हम ऐसी जगह पर बैठ जाए कि पहाड़ है, आवाज़ ना आए। वहाँ भी आवाज़ आएगी, साए साए पहाड़ की, हवा की। चलो गुफा बना लेते हैं, उसके अंदर बैठ जाए, आवाज़ ना आए। वहाँ भी एक अजीब सी आवाज़ आती है, आवाज़ हर जगह आएगी। तब करेंगे क्या हम? तो एक ही उपाय है, हम क्रिया योग ध्यान करें, जो दीक्षा वाली क्रिया है। करते करते हमारी करंट सब अंदर जाएगी। हमारी करंट जब अंदर जाने लगी, अधिकांश अंदर आ गई है और बाहर बहुत ही अंश में गई। बाहर कुछ तो जाएगी, कुछ नहीं जाएगी। तो एक अजीब स्थिति आती, डर लगता है। फिर धीरे धीरे करके यहाँ उठी। जब हम इसके ऊपर उठ गए, हम इसके ऊपर उठेंगे तो क्या कर लेंगे? हम बुद्धि बनाएंगे। हम बुद्धि को कहेंगे, मैंने तुमका तुम्हारा निर्माण किया है। जैसे कार बनाते हैं, कार में बैठ करके जाते हैं, ऐसे बुद्धि बनाइए। उससे कहीं हर जगह पर जोड़ने वाला काम करिए। उन शब्द में, अक्षर में, वाक्य में, चाहे पद्य हो या गद्य हो, ऐसा अर्थ निकालिए कि सब जुड़े। आप बुद्धि को आदेश दीजिए, निकालती है। स्वामी तेजस्वी की टेक्निक, प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य के अंदर ऐसा खोजिए कि एकता स्थापित हो, सब जुड़े। तो कब होगा? अभी बुद्धि के बहने पर तो हम चलते हैं, बुद्धि के इशारे पर हम काम करते हैं। हम बुद्धि के स्लेव हैं, हमारी मास्टर है वो। अब बुद्धि को हम निर्मित करेंगे, मन को भी बनाएंगे, बुद्धि को भी, इंद्रियों को भी। इनको बना करके फिर हम इनको दिशा देंगे। ये तभी संभव होगा जब दीक्षा वाली क्रिया करते करते धीरे धीरे, अचानक नहीं होगा, याद रखिएगा। अचानक चाहेंगे तो आपको चक्कर आएगा, मूर्छा आएगा, आप गिर पड़ेंगे और संभाल नहीं पाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि मन डरवाता है। मन की एक आदत है रहने की। मन इस स्थिति में रह रहा है, वे अचानक आपके शरीर हल्की हो जाए, घबरा जाएंगे। अचानक भारी हो जाए, घबरा जाएंगे। थोड़ी साइंस में देखिए, जब आपको ये सब होने लगे, जिसमें रिवोल्यूशन में है, अंत में सूत्र नंबर 11 में है कि जब हम अनिमा की तरह हो जाए, हम अपने कितने छोटे लगे कि नाप ही ना पाए।
इलेक्ट्रॉन से भी छोटे, उसका कोई मेजरमेंट जैसे बिंदु है। हम इतना ध्यान कर लें कि उस रूप में अपने को अनुभव कर लें और घबराएं ना, और हम इतने बड़े हो जाएं कि अपने को माप न सके, उससे भी ना घबराएं। पता तक बैठे बैठे ध्यान की, आंख बंद किए तो आपका सिर छत पे जा रहा, घबरा गई, ये क्या हुआ। इतना छोटे हो जाएं कि बिंदु, इतने बड़े हो जाएं कि माप न सके, लेकिन मन घबराए ना। मन होता आदत पर, वो घबरा जाता है और बुद्धि कहती कुछ खतरा है, बंद करो। बुद्धि मन का साथ देती है। फिर क्या है, लघिमा इतने हल्के हो जाए लगे कि आप उड़ जाएंगे, या इतने हल्के हो आपने सोचा कहीं उड़ेंगे तो नहीं, और उड़ गए। आपने पढ़ा होगा ऑटोबायोग्राफी में, कोई एक थे ध्यान करते थे तो ऊपर उठ जाते थे, उनका सिर छत पे लगा रहता था, तो उनको खाना खिलाने के लिए नीचे लाया जाता था, पकड़ के खाना खाते थे, एक बार थाली लेकर के ही ऊपर उड़ गई, क्योंकि उनके वश में नहीं था। जब हल्कापन लगा तो हल्कापन के स्लेव हो गए वो, उसके बस में हो गए, तो ऊपर उठ गए वो। ऐसा भी ना हो, एकदम हल्के हो जाए तो हम घबराएं ना, इतने भारी हो जाए जैसे पहाड़, हिला ना पाए, अरे हाथ हिला नहीं पा रहे, अरे खड़े नहीं हो पा रहे, तब भी मन डरे ना। और आपको जो चाहिए वो मिल जाए तो बड़े खुश मत होइए, जो चाहे वो मिल गया, जिस चीज़ को चाहे वश में हो गया। सूरज अस्त हो जाए तो अस्त हो जाए, तो फिर ईगो ना है कि हम बहुत महान हो गए हैं, ये सब चीज़ें हो, और आई एंड गॉड आर वन, ये अनुभव हो जाए। आई एंड गॉड आर वन, तो आप ब्रह्मांड बना लेंगे। कारण जगत, सूक्ष्म जगत, भौतिक जगत, इतनी चीज़ों को जब हम पाते हैं ना, तब हम भयमुक्त होते हैं, इसके पहले नहीं। और जब तक भय बनी रहेगी, खूब सावधानी से चलिए। हमें क्या खाना चाहिए, रोज ऑब्जर्व करिए, हम कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, मन से क्या सोचते हैं, बुद्धि से क्या तर्क करते हैं। एकदम सजग रहिए। सजगता हटी कि आप गिरे, तो इसका उपाय क्या है कि सब झंझटों से हम थोड़ा सा मुक्त रहे। बड़ा आसान है, खूब क्रिया ध्यान करिए, खूब सेवा करिए, और सेवा करके अपने को मिटा दीजिए जिसकी सेवा करिए। मिटा देने का अर्थ क्या है, सेवा करके ये ना हो हमने सेवा किया, आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, इसे कहते मैंने सेवा करके आप में हम मिट गए, सेवा करके हम भूल गए। कहते नहीं सेवा कर भूल जाइए। इस तरह से जब आप करेंगे तो जो इतनी चीज़ों को सुन रहे हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा, 8 सिद्धियां मिलेंगी, 9 निधियां मिलेंगी, तब हम यहाँ पर पहुँचेंगे। हम तब तक मन और बुद्धि की गुलामी रहेगी। तो इस गुलामी से मुक्ति का सीधा उपाय है क्रिया का अभ्यास खूब मनोयोग से करिए, खूब सेवा करिए, जो भी सेवा आता है, और सेवा करके कोई भी रिटर्न ना चाहिए, फिर आप तेजी से बढ़ते जाएंगे। यही एक उपाय है। लेट मी एक्सप्लेन क्लियरली। All problems we face when you practice Kriya meditation, you reach to the higher consciousness where mind and reasoning power cannot play any trick. In this position, we are slave of our reasoning power. We are slave of our mental reflection. We are slave of our senses. Because of this slavery, we are not free. Therefore, we have fear. Moment you practice Kriya meditation, you reach to the higher consciousness, where you realize now you are above reasoning power, above power of mind, above power of senses. Then you will realize there is no fear. We want this stage. And phobia or fear of any kind is the root cause of all problems. Like phobia of bacteria, viruses. Viruses are creating hell everywhere. When there was coronavirus, doctor helped a lot. But they were not knowing how to cure it. Everybody was doing imaginary treatment. At the last they came to know whatever treatment were given, all were incorrect. All the injections were not correct. Whatever antibiotics given, useless. Therefore it becomes very tough. If there is a viral, we have nothing to do. We cannot save ourselves. Just only God will save. This is the biggest phobia. But when you practice yoga meditation sincerely and try to get rid of slavery of reasoning power, slavery of mind,
slavery of senses. Then you reach to the higher consciousness. Then you realize, oh, it is very nice, very tooth. Head to toes is made up of bacteria, viruses. Not only my head to toes, but bacteria, viruses are responsible. They say physical universe, earth and sun and moon and stars, animals, plants, all are structure of viruses and bacteria. The different fashion, now they are twinned together and they become skin and muscles and bone and cartilage, blood and lymph, everything. Then we should have no fear with the virus bacteria. But how to love them? We should know the science of how to love virus bacteria. Love only exists if we are slave. We are slave of reasoning power. Buddhi, wisdom, W for wisdom. We are slave of reasoning power. Man, M for mind. We are slave of mind. We are slave of senses. Then we have all kind of problems. Moment by practicing Kriya Yoga, when we are above from the slavery of senses, mind and reasoning, you reach to the higher consciousness. How to reach there? And when you reach there, it is very problem when we start going away from the reasoning power, from the mind, we develop a fear. Because mind lives with the habit. What is the mind and reasoning? This is called the something, CHIT. This is called the omnipresence consciousness. How to make a diagram? You cannot make picture. Formless, omnipresent God, you cannot picture it. You can just picture like this, round. And we are writing Chit. Then from Chit, 24 elements descended. In 24 elements, there is a heart element. We are slave of a heart. What is the heart? Attraction power, repulsion power. Heart is having dual power. Heart attracts through attraction, through repulsion, both. We are slave of that. Without that, we cannot live. We are slave of the soul. What is the soul? I want to save myself. I have fear. I feel I am power or two. I am not having power. Moment I realize head to toe is presence of power, knowledge, peace, then we are above the soul consciousness. This is small s. There is one capital S. What is the capital S? This is this. This is capital S. This is Chit. This mind, mindless with the habit. Therefore, when you practice Kriya Yoga meditation, then what happens? Current starts returning inside and it starts moving up. When currents are moving up, mind is habitual of certain state of consciousness. When the state of consciousness changes, mind is having fear. When mind having fear, then reasoning supports you are right. This fear is good. You protect yourself. Then you cannot go beyond slavery of mind and reasoning. Then what we have to do? Very difficult. But let us decide. We are going to do it. No problem. We are not having fear. At last we reach here. When we reach here, that is the above horizon of mind and reasoning. Then what we realize? We can synthesize wisdom. We can synthesize reasoning power. We can synthesize mind. We can synthesize sense of organ. What Swami Tesagiri taught in Holy Science. How to create everything, physical world, astral world, causal world. The moment you are able to synthesize reasoning power, then they will obey you. The mind will obey you, the reasoning power and sense organ will obey you. Then what we want? To say to them, bring unity. Take any letter, any word, any sentence, any prose, any poetry. Try to bring the truth hidden inside. That truth should bring unity among all. That is what we want. The present time, mind and reasoning have fear. In that fear there is no unity. Now you have to create new dimension of reasoning power and mind. That you can do it. But it is very difficult when it starts moving here, then what we realize? We realize these things and it is very fearful. How nice this text. Can you imagine? This is a treasure of knowledge. Knowledge which is present in the cosmos, here, is packed in this
holy text. Now I am just opening the Revelation, last sutra, sutra number 11. Moment you start ascending to up, to reach to here, you want to get rid of slavery of mind and reasoning. Alright, then mind having fear. When you start feeling that you are like dot, dot is called bindu. Bindu is called the dot, which have no dimension, no length, depth, no mass, no volume. That is called the bindu. The moment you start that, oh, you are like a bindu. You are nothing. Now you cannot measure yourself. Then mind gets fear. No, you are 6 feet height. Your weight is this, your weight is this, your volume is this, you are that. And you are forgetting. The mind creates fear. And reasoning power supports, you are right. Very difficult to realize that I persist, I exist in the form of bindu. Mind will oppose. Second, if realize, I am Mahima. What is the Mahima? My height is so big. When I close my eyes and sit in meditation, I feel my head is touching beyond the stars, galaxies. When I feel like that, everything, then mind having fear. I have great fear. Mind having fear and reasoning power supports here. Something is going to bad. Open your eyes. Okay, all right. With opening eyes, still you see, oh, I am so big. My head is touching there, I know it. My head is going across the ceiling. The mind will say, something is problem, you are mental. Reasoning power will say, yes, correct, go to this some mental doctor. Therefore, mind reasoning has made ourselves slave. We are slave of reasoning power and mind. See the next. When you practice, you will realize you are very light. Lighter than a sky. When you are lighter than the sky and you become slave of a sky, then you cannot sit on the ground. Immediately you will be sucked up. There is one story in the autobiography of Yogi. There was a person who was meditating. When he became one with the space consciousness, he became hypnotized with that. Then he couldn't have power to go out of that. Then all the time his head was on the ceiling. So somebody had to give food to him, then his leg was pulled down, then he had to make sit and eat. Once that happened, leg is just left somebody, then he went up with the plate of food. We do not want that. Therefore, when you feel very light, lighter than the sky, mind creates fear. And reasoning power says, yes, correct, you have something wrong, take some medicine, mental medicine, you have psychiatric problem. Other time, when we feel that you are very heavy like mountain, you want to walk, you cannot walk. 3 days over, you cannot move. 5 days over, you cannot move. Oh, something is bad, it's become mental. The mind creates fear and reasoning power supports. That problem we face when we are ascending up. The next is called the prapti. Okay, I like whatever, what I think it appears. I think that God should come in the form of Hanumanji. Oh, Hanumanji is there. Oh, Hanumanji give me laddu, he gave laddu. And I ate. My hunger satisfied. This is true. Then I got very great ego. Oh, I am great. Again it came down. You are hypnotized by your mind, by reasoning. That was not Hanumanji, that is your consciousness manifested in the form of Hanumanji. Your consciousness manifested in the form of laddu, as you dream in the night. But something happens next, Varshit, whatever you want you can control. Oh, it is the sun. Oh, sun, please set. Moment you order, oh, there is sun setting, become the night. Oh, it become the night. I am so great. Oh, sun, arise. Sun came up. Oh, see, I am so great. Mind is telling, I am great. Your reasoning power is supporting, yes, correct, you are great. Immediately I came down. No one is great, no one is small. All are greatest and nothing is greatest. This is the truth.
then we got whatever we want, we can fulfill all desires. I want to eat rasgulla. Okay, in the mouth rasgulla came. Eating very nice. But that is created by my own thought. When mind convinced, no, I can do anything. No, I cannot do anything. This is created temporary. After that, a time will come, you cannot create this. After that, at the last, we realize I and God are one. That is the ultimate. Then you can create physical world, astral world, causal universe. That stage we want. In order to reach that stage, so many things we have to experience. Very difficult to experience and have no fear. But then how to reach it? The simple way. Practice yoga sincerely with the highest devotion and serve. Serve without any return. When you serve, do not think of any appreciation. When you serve, do not have thought of any return. Moment to follow this, you will not become slave of mind and reasoning. You will not be misguided by heart and ego. Directly our journey will be inside and upward. This is what we want. We need this kind of practice because we have to make a change on this earth. We want no violence, no fighting, no killing. It is only possible when you create a reasoning power, create a mind and senses which can work according to the principle of unity. Because our aim is the state of yoga. Yoga means perfect unity. This is the brief message. I request you again and again. You have got initiation. Someone who has not got initiation, practice recharging sincerely. Moment you become good practitioner of recharging, I will give initiation. If you have any doubt here, go and join Yogda Math, SRF. If you are having any doubt there, because people are confusing that SRF lessons are changed. Yogda lessons are changed. This is not correct. They are not changed. Join there. If you are not understanding there, I will make you to understand. This is the brief message for today. Now have double breathing. Feel head to toes. Bless your own presence. Through this our own presence, we will learn how to ascend up. आइए हम डबल ब्रीदिंग के साथ अपने अस्तित्व की अनुभूति करें, जिस अनुभूति के साथ साथ हम उस सीढ़ी पर चढ़ेंगे जहाँ से चढ़ करके हम अनुभव करेंगे कि हमारे परमात्मा के बीच दूरी नहीं है. Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation. Now we will sit and open eyes.